मलेशिया में फार्मासिस्ट कैसे बने? दिस इज अ क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द pharmacists want to know. So if you are a registered pharmacist in your home country, want to work in Malaysia, so I'm going to discuss each and everything in this video, right? So you know that I work around 4 years in Malaysia as a pharmacy lecturer. I have trained hundreds of students in Malaysia, so I know very well about Malaysia. I lived there for 4 साल तक, and I worked there 4 years. And so let's see, as a pharmacist, how you can work. So as a pharmacist, if you want to work in abroad in any country, you need a license to practice there. Without a license, you cannot work there, right? So to get practice, you need to basically do document verification, first step, and then you need to write the exam, and you can become a pharmacist. Generally, most of the countries में this is a requirement, but Malaysia is little bit different. Malaysia में around right now around 25 universities फार्मेसी कोर्स को ऑफर करती है. मनी ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव 100 सीट्स. सो अभी इतना जॉब का रिक्वायरमेंट इतना नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ कि हाउ यू कैन रजिस्टर. बहुत सारे लोगों को होता है कि सर हमको रजिस्ट्रेशन करना है. तो मलेशिया ने गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक लिस्ट को रिकॉग्नाइज किया हुआ है. particularly from any country, so each country they have selected some pharmacy colleges. So if you are from that pharmacy college, it means you no need to write any exam. Without writing any exam, you can get registered in Malaysia as a registered pharmacist. देखते हैं कि we are talking about the India, but there is so many other countries, right? दिया हुआ है यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज के लिए क्या करना है. बट यू कैन सी हियर ये जो अपडेटेड लिस्ट है 2025 का ही लिस्ट हम यहाँ दिखा रहे हैं. ये 13 मई 2025 को ये है इस लिस्ट को अपडेट किया गया, ठीक है. और ये जो वेबसाइट इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ moh.gov.my मलेशिया गवर्नमेंट का ये वेबसाइट है जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं. तो यू कैन सी दे आर सेइंग इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड इन मलेशिया, आपका डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ दिस कंट्रीज. सो आई वाज बेसिकली a lecturer in this university. So if someone is from this university, obviously they can register as a pharmacist. Baki, you can see all these approved university. If you are graduate any of this university, you can get registered as a pharmacist in Malaysia. But this is for Malaysia. But I'm talking about कि भाई कौन सी और भी countries. There's so many universities you can see here. अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी बन गई हैं. और सऊदी अरबिया, if you are from Saudi Arabia, want to get registered in Malaysia. So if you are graduate from University of Riyadh or King Saud University, if you are done your Bachelor of Pharmacy, you can get registered in Malaysia without writing any exam, right? And similarly if you are from Australia, all these universities, if you are graduate हैं अगर आप, then you can get registered. Then Canada का लिस्ट आ गया, UK का लिस्ट आ गया. I'm not going, because I know you guys want to know from India ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो can get registered as a pharmacist without writing any exam, right? तो मैं उसी लिस्ट को देख रहा हूँ. आयरलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया. तो व्हाट एवर योर कंट्री यू कैन गो एंड चेक. इराक में भी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद को दिया, जापान में ये 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं. न्यूजीलैंड में ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा को एक यूनिवर्सिटी को दिया गया है. फिर इजिप्ट में ये बहुत सारी, इजिप्ट में एटलीस्ट 4 यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी गई हैं. एंड सिंगापुर का जो है NTU भी है. अगर आपने NTU सिंगापुर से किया हुआ है, देन यू कैन गेट रजिस्टर्ड इन मलेशिया. कोई भी एक्सपीरियंस का कोई भी मतलब जो है. नाउ कम टू द इंडिया. तो इंडिया में ओनली 2 यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड की है इन्होंने. और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये है नागपुर यूनिवर्सिटी और BHU. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है या आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है, यू कैन गेट रजिस्टर्ड इन मलेशिया विदाउट राइटिंग एनी एग्जाम. ओके, बट इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अदर कंट्री देन यू टू राइट. इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है उन्होंने, जहाँ पर मेंशन किया हुआ है. अगर आप यहाँ से हैं तो यू आल्सो कैन एंड देन ताइवान और बहुत सारी कंट्री, जॉर्डन में एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने. UAE में गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी को इन्होंने बोला हुआ है तो ताइपे मेडिकल यूनिवर्सिटी को बोला हुआ है तो ऑल दिस यूनिवर्सिटीज को यहाँ बोला हुआ है. बट इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अदर कंट्री यू टू राइट द एग्जाम. बट द इशू इज हियर, वहाँ इतना वैकेंसीज नहीं है, जॉब अवेलेबिलिटीज नहीं है. तो वंस यू पास द एग्जाम यू नीड 1 year इंटर्नशिप, एंड टू डू इंटर्नशिप यू नीड ए वीज़ा. और वीज़ा कंपनी देना नहीं चाहती है वहाँ मलेशिया में. अगर आपको कोई वहाँ रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो आपको हेल्प कर पाए, इन दैट केस इज डिफरेंट. अदरवाइज वेरी वेरी लो चांस टू गेटिंग ए जॉब इन मलेशिया एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. बट ऑफकोर्स इफ़ यू आर फ्रॉम दिस कंट्रीज भी अगर आप हैं,
BHU या नागपुर यूनिवर्सिटी स्टिल यू नीड वीज़ा टू वर्क देयर, नो। तो वीज़ा का इशू रहता है मलेशिया में, बिकॉज लोकल स्टूडेंट को भी आज की डेट में जॉब मिलने में डिफिकल्टीज हो रही है ना। तो बट इफ़ यू हैव इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रीज में जॉब मिल सकता है आपको। इफ़ यू हैव वर्किंग एक्सपीरियंस इन योर होम कंट्री आफ्टर बी फॉर्म या फॉर्म 2-3 साल अपना जॉब के बाद, यू कैन वर्क इन इंडस्ट्री बट नॉट एज ए registered pharmacist in hospital or retail pharmacy, right? If you are a pharmacist, want to work in abroad in any country, anywhere in the world, we can help you to complete your entire process. Connect us today. Thank you.